Good morning, all of you. A sweet good morning and welcome back to your math class. So, dear students, today we will discuss about your perimeter and area. अगर आप अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हो मेरे चैनल को यानी कि अमृता ट्यूटोरियल को जरूर सब्सक्राइब करना। ये जो रेड कलर के बटन है उसको सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर हिट करना है, क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत सारे नॉलेज मिलने वाले हैं, बेसिक से लेकर हायर तक। तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वीडियो जरूर देखना है। तो आज का सेक्शन शुरू होता है पेरीमीटर एंड एरिया के बारे में। Okay, so we know different types of figures like solid figure and plain rectangular figure. So the plain rectangular figure are composed in certain line segments. So the rectangular figure having no free end and ends are known as closed figures. So this one is the closed figure when no free. Okay, but it is a open figure because it is not closed his end. So it is closed figure and it is open-ended figure. Okay, suppose this one is open figure but this one is closed figure. Okay, suppose this one is closed figure and this one is open figure. Okay, so first I'll find out which shape is closed and which shape is open. Okay, then the perimeter of any plane figure is the length of its boundary. That is the sum of the length of all sides. So perimeter, it means चारों तरफ का जो बॉर्डर होती है, बॉर्डर लेंथ को का आपको लेंथ एंड ब्रेथ उसका होता है, उसको माफ कर मेजरमेंट करके लिखना है और एडिशन करना है चारों तरफ, तभी जाके वो बनता है बाउंड्री. द यूनिट ऑफ पेरीमीटर लाई डाउन द यूनिट ऑफ पेरीमीटर will be same as the units of length. Okay, the units of length. Then suppose this one is your one closed figure and it is a like suppose, okay, it is a square size. Suppose this one is 6 centimeter and you know the square has all sides are equal, so it is also 6 centimeter. It is also 6 centimeter. It is also 6 centimeter. Okay, so perimeter equal to A B side addition by B C side addition by C D side addition by A D side. It means 6 plus 6 plus 6 plus 6. Okay, so equal to 6 plus 6 equal to 12, 12 plus 6 equal to 18, 18 plus 6 equal to 24. Yes or no? 24. But it is a solution form of find out the perimeter of a square. Okay, what are they? The perimeter of square equal to 4 into side, one side length. Okay, so it means 4 into 6 centimeter equal to 24. Okay, so this one is the
पेरीमीटर स्क्वायर की सॉल्यूशन फॉर्म। अभी देखते हैं एक रेक्टेंगल की सॉल्यूशन फॉर्म। आपको पता है एक रेक्टेंगल बड़ी सी होती है, ओके, उसका क्या होता है, एक लेंथ होती है और उसके साथ साथ एक ब्रेथ होती है। सपोज दिस वन इज 6 सेंटीमीटर, दिस वन इज 3 सेंटीमीटर and opposite sides equal. So here is 6 centimeter and here also 3 centimeter. So okay, perimeter equal to AB side plus BC side plus CD side plus DA side. So no, it means AB plus CD, okay, plus BC plus DA. It means 2AB plus 2BC. So you can put here 2AB plus BC. So you can put here 2 into length. 2 into length plus breadth. Here is the solution for 2 into length. It means 2 into 6 plus 3 equal to 2 into 9. It means 18. Okay, 18 centimeter, 24 centimeter. अभी देखेंगे कि आपकी कुछ एग्जाम्पल्स, ओके, तो आपको पता करना है। फिर से लिख देता हूँ, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की सॉल्यूशन फॉर्म। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ। Okay, so perimeter of square, it means 4 into side. ये दो सॉल्यूशन फॉर्म को आपको क्या करना है, याद करने हैं। अभी देखें कुछ क्वेश्चन सपोज द लेंथ एंड ब्रेथ, और इसको पता करने के लिए और एक बात बताता हूँ। जब आपकी रेक्टेंगल की पेरीमीटर निकालना है तो आपका लेंथ एंड ब्रेथ दिया होगा। अगर आपको स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना है तो आपका साइड का कुछ लेंथ दिया होगा। ये आपका वर्ड फॉर्म में आएगा। सो क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1 बड़े ध्यान से देखनी है, ओके। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, ओके। द लेंथ and breadth of a rectangular figure equal to 15 centimeter and 6 centimeters. So find out the perimeter. It is all about, you know, it is a rectangular because already in the word form is written is rectangular figure. So length equal to given length 15 centimeter, breadth equal to 6 centimeter. So perimeter equal to डालो सॉल्यूशन फॉर्म को, पेरीमीटर इक्वल टू 2 into length plus breadth. It means 2 into length equal to 15 centimeter plus 6 centimeter equal to 2 into 15 plus 6 equal to how many? 21 centimeter. So 21 multiplied by 2 equal to 42 centimeter. So you can write the perimeter of the given rectangular figure is 42 centimeter. So example number 2, दो ही एग्जाम्पल देगी, ओके। तो अभी निकालना है स्क्वायर की। द पेरीमीटर पे स्क्वायर शेप फिल इज 224। हाँ, अभी आपकी स्क्वायर दिया गया है, आपको निकालना है फिर उसका वन साइड ऑफ द लेंथ।
So first of all, perimeter you know, perimeter equal to 4 into side. So when you आपको जब साइड निकालना है तो क्या करना है ना, पेरीमीटर डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि 4 को निकालना है। ऑलरेडी पेरीमीटर दिया कितना है, गिवन पेरीमीटर इक्वल 204 मीटर डिवाइडेड बाई 4, तो निकालो 224 डिवाइडेड बाई 4, 4 5 जा 20, then 2 here is 4, 4 6 जा इक्वल टू 24, 0 यानी कि 56 मीटर। ओके, अगर आपको 56 मीटर दिया होगा लेंथ, ओके, ऑफ योर साइड, सो 4 इंटू साइड 4 इंटू 56 इक्वल टू 224 मीटर। आपको पेरीमीटर दिया है, आपको निकालना है साइड ऑफ द लेंथ इक्वल टू 56 मीटर। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा जरूर शेयर करना। मिलता है अगले वीडियो, तब तक के लिए वंदे मातरम। खुश रहो, तंदुरुस्त बनो, दुनिया को करके दिखाओ ऐसा, दुनिया करना चाहे आपके जैसा।